But overall, the main two issues are safeguards under 6th schedule or statehood or restoration of democracy. Well, that's what the talks will be about, and it will not be just me. There will be many leaders from Ladakh. But overall, the main two issues are safeguards under 6th schedule or statehood or restoration of democracy. So, as I said, give and take. Therefore, if not on both, we would hope on one we are flexible, on the other side is flexible. That's how we want to, expect to give and take and be flexible in the interest of nation building. नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, जो सोनम वांगचुक लद्दाख में इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट थे, जिस तरीके से उनको एनए लगा के जेल में बंद किया गया था, जोधपुर की जेल में रहे। हालांकि फाइनली सरकार ने खुद ही एनए से रिवोक कर लिया। तो उसके बाद पहली बार वो पब्लिक के सामने आया और मीडिया के सामने आकर उन्होंने बातचीत करी। 78 लोधी स्टेट में, जो कि कांग्रेस के राज्यसभा एमपी हैं विवेक तनखा जी, उनके घर पर ही हैं और वो क्योंकि उनके लॉयर्स भी रहे हैं, तो इसलिए वहीं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीडिया का बड़ा जवाब रहा था, जो पहली बार सोनम वांगचुक को देखना चाहते थे। और सोनम वांगचुक जिस तरीके से बाहर आए, मीडिया का पूरा हुजूम था। मीडिया के सामने उन्होंने लगभग हर सवालों का जवाब दिया और मुख्यतः उन्होंने ये कहा, सबसे ज़्यादा उनको जेल से आने से ज़्यादा खुशी इस बात की है जिस तरीके से सरकार दोबारा से वार्ता करना चाहते हैं। वो खुले मिजाज से सरकार के साथ वार्ता में जाने को तैयार है और वो उम्मीद करते हैं दोबारा उन्हें किस तरह का आंदोलन या अनशन करने की ज़रूरत ना पड़े। हालांकि उन्होंने एक बात और कहा, अगर ज़रूरत पड़ी तो अनशन करने से भी नहीं चूकेंगे। तो सुनिए पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें सोनम वांगचुक और उनकी पत्नी थी। सुनिए पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। Thank you all for coming and for all your support throughout. You have been wonderful voices of support for truth. And apologies for taking 2 days to get my health on track and checked up. But I feel wonderful today after these 2 days of regaining my voice and unfurling my little wings and reorienting myself. So, thanks to our amazing team of lawyers, as Sir described, who have been supporting us pro bono as their social responsibility, we were sure of a victory or a win in the court. But I'm a little greedy person. A win was not enough for me. I was always looking for a win-win. A win would be just Sonam Wangchuk wins. And what good is Sonam Wangchuk winning if Ladakh and the Himalayas and the causes he represents do not win? So therefore, we were looking for a win-win for the causes also, and even more, a win-win-win. Now, with the recent extending of hands by the government to build trust, as they have said, and to facilitate meaningful, constructive dialogue. This is a great thing, because this way Ladakh will also win and our cause will also win. So it will be truly a win-win. It will be a win-win-win also, because the government will come out looking better and our image in the world will be a little better, and it will be even better win-win-win if the Honorable Court also records a judgment in this case, apart from revocation of the order itself, so that it guides future executives and future policy makers about how to use, and especially how not to use, such laws as National Security Act. So I'm in that way happy that it can be a win-win-win. I hope it can be. As I said, they have offered for constructive, meaningful dialogues. Actually, this is all what we were struggling for, to start dialogues. And we had to struggle so much. Walk from Leh to Delhi, go on unshans, go to jail,
to exactly get that. If you see all movements in Ladakh, they are appealing for starting the talks and dialogue process. Even yesterday's rallies that I watched from here, the demand was to resume talks. Where do you find such a place and such a people? Normally, you find people leaving the dialogue table and picking up guns, and government appeals to them, drop your guns and come to the discussion table. That's what you would have seen most of the times. Here's a people who is appealing to the government, please come on the discussion table and start a constructive dialogue. Now that government also says, let's start a meaningful constructive dialogue and build trust, I think we are starting to sink. And I really hope that not just dialogue, not just talks, but meaningful, effective talks which lead us to something good. Otherwise, it has been not just 6 months, but 6 years of struggle for us to get to the meaningful, constructive part of the offer. So I'm happy to see in their offer and in their order of revocation that this is done to build trust and confidence for meaningful, constructive dialogue. And I really hope it yields that. It has made my job easy. I'm happy that way, because otherwise in the jail I was sure about our team and this little one who has been moving and shaking the earth and heavens, that we will get justice. So now that we have this constructive dialogue, it makes my job easy. Otherwise, I was waiting to come out either as we win in the court or after 12 months. I was very well prepared to spend 12 months and come out and share the horror stories of all the wrongs that happened on me and on her. Right from how abruptly from my home I was, bundled up and thrown into this jail without any opportunity even to call my family or my lawyers for days, more than a week. Or of her, who could not even meet journalists to voice her anguish with heavy security positioning around the campus, and how she slipped out into Delhi to knock the doors of the court, and how for 2 or 3 weeks there was kind of cat and mouse chase on the streets of Delhi with her cars followed by people in cars and motorcycles. It was all a filmy scene, not very filmy at the time. Or how in the jail I had such difficulties in defending myself by sending facts about the case. It was a huge horror story of how it was made so difficult to send anything to my lawyers. Otherwise, it was great. The jail, the staff, the people there were very upright and very kind, despite keeping to their laws and disciplines and so on. But now I'm happy that I won't have to go into those things. This is what I was compelled to think of, that my story I'll have to share with the world, so that, not really for me, but to make this nation, where people can operate fearlessly and where we can function when we are truthful. Ordinary citizens have their rights. But now with this hand extended from the government, I'm spared of having to do any of those. I really hope that the dialogue process will go on, and only if they fail and we are compelled to again, appeal in other ways, will
we need to share those. But as I said, it's nothing less than a thriller, non-fiction thriller, or nothing less than a movie perhaps could do justice to the details of what all we went through during these 6 months. But I really want to hope, and I'm sure that we can happily forget those and look forward to a beautiful beginning, a new beginning, where trust is built and dialogue happens, and through dialogue we get at mutually satisfactory results. I'm sure a talk is a give and take process. Both sides have to be considerate and flexible, but it has to be win-win, and win-win-win, as I said. So I hope to go back to Ladakh. I'm currently reorienting myself. I hope to consult our leaders of apex body and KDA, and then engage in discussion, dialogue, and hope we will have great things to share with you in coming times. Finally, I thank, of course, all of you for coming here. I thank, as I said, our legal team has been wonderful, who have made it possible. It was even the advance from the government had very much to do with our status in the court, but nonetheless, it's a great thing to start a new process. I'm so happy that we can, my faith in the judiciary of the nation is even more strengthened with what we saw in the courts. As the nation followed, you must also have. I couldn't, but I could understand how it went, and that was very good. And I hope now that it will yield some things for future also through a judgment perhaps. I want to thank all friends, supporters, every citizen in fact of this country who have been so supportive, and their support and their attention to this story is also perhaps a reason where it's going towards a resolution or the beginning of that. You all in the media, people on social media, have all been amazing people. People of Jodhpur, the city where I was for 6 months nearly, without seeing any of the city except for the 4 walls of my compound, but I could sense a warmth nonetheless, from the people, from the guards, from the staff. Though I was not allowed to see any other faces, I have not seen any other non-uniform faces in the last 6 months from Jodhpur. So I couldn't connect, but I felt such warmth somehow to that city. So I want to thank them also, and of course government for this initiative in trust building and dialogue and discussion. And I hope that this trust building can also start a process of generosity, whereby these cases, many of them are meaningless cases of arrest in Leh for 24th September. Even people who were going to give their blood, donate blood, have got arrested and got an FIR. Such things have happened. 2 people are still in jail, and I'm sure this process is undone. And there are also voices among people to ask, where did it start? How did this violence start actually? That must be examined. There are voices that ask, how come so many people died with injuries in the chest? But I think all this could be undone. People can take back their suspicions and doubts, and government can take back their cases. Maybe some genuine, many maybe need to be relooked, and all status is restored for truly warm and constructive atmosphere for a meaningful dialogue. That's my hope, and
Anything you would like to say? You don't understand me? So I want you to also hear from this little one who has gone through so much. I mean, I used to always say she's my best kept secret, but she turned out to be a best kept secret for me also. I didn't know she was what she was before. So I'm so grateful, and yeah, she is instrumental in where we are today. Please. We have been meeting and I want to thank you all कि आपने हमारी बात को सबके सामने जो आप लेके गए, तो मुझे लगता है कि ये सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ आप जो लोगों के पास हमारी बात लेके गए उसने भी इस मुद्दे को जो शिफ्ट करने में बहुत मदद की है। और मेरा, जैसे मैं हर इंटरव्यू में कहती रही हूँ कि कोई भी एक्सपीरियंस बिना वजह से नहीं आता, तो इस एक्सपीरियंस ने सोनम को एक तरह से स्ट्रॉन्ग और रेजिलेंट बनाया है, मुझे और एक तरीके से। और मुझे लगता है कि ये नेशन बिल्डिंग के काम में ज़रूर आने वाला है। और जल्दी ही जैसे आपको ये पता होगा कि लद्दाख शायद इंडिया का वो लास्ट ऐसा रीजन हो जो कि एक इंडिपेंडेंट रीजन मतलब स्टेट या जो भी बनेगा। तो ये हमारे पास एक मौका है कि सारे जो हमने स्टेट्स बनाई हैं उनका जो भी हमारा एक्सपीरियंस रहा है, हम उससे सीख के एक ऐसा रोल मॉडल बना सकें लद्दाख को, ताकि वो आत्मनिर्भरता में और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन में और लोगों के एम्पावरमेंट में वो एक मिसाल बने, सिर्फ भारत के लिए नहीं पर पूरी दुनिया के लिए। तो ये काम हम मिलके लद्दाख के लोग, लद्दाख की लीडरशिप, केंद्रीय सरकार और सोनम और हम ये मिलके बहुत अच्छे से एक ऐसा एक मॉडल बना सकते हैं जो कि इट विल बिकम, हमने हर राज्य में कुछ ना कुछ इश्यूज और प्रॉब्लम्स देखी हैं, तो ये किया जा सकेगा, ये उम्मीद है। और क्या कह सकते हैं कि बाकी तो डिटेल्स आपको पता है, ट्विटर में मैं डालती रहती थी, अप टू डेट सब को रखा मैंने जितना हो सके, कोशिश की। बहुत अच्छा लग रहा है कि ये दिन आया है। और हर एक चीज़ का एक समय होता है, और अभी इस फ्रीडम को लेके हम जिस काम के लिए निकले थे, जो कर रहे थे, अपनी यूनिवर्सिटी को आगे ले जाएंगे, लद्दाख को आगे ले जाएंगे और भारत को आगे ले जाएंगे। Well, that's what the talks will be about, and it will not be just me. There will be many leaders from Ladakh, but overall, the main two issues are safeguards under 6th schedule or statehood or restoration of democracy. So, as I said, give and take. Therefore, if not on both, we would hope on one we are flexible, on the other side is flexible. That's how we want to expect to give and take and be flexible in the interest of nation building. So therefore we'll see, but of course it should not be a lose-lose for one side. That will not be a successful dialogue. It can be a win-win where each side accommodates the other, as you said. But if we are made to accommodate only on one side, give up this, give up that, we will not give you what you wanted on both accounts, democracy or safeguards, then that will be a problem. This will prolong, and the whole intention of rebuilding trust and meaningful constructive dialogue then will be hampered. And I hope when they say this now, after 6 years of to and fro and umpteen number of talks, maybe 25, 30, they mean something more than what they previously had. I want to hope and believe
So as we'll go into that We'll- later, yeah. but the way forward is that negotiations or talk is a way of cutting the cake in such a way that everybody thinks he has the bigger piece. You know, so that's where the creativity has to come. And whatever has happened in the past, let's not dwell on that, because you know, let's go to the future and a new dawn and a new beginning and a new start. You want to say something? Just to add to this question already has been asked, Ladakh, this apex body from Ladakh had Shirangoli. So we want to see that in the last talks they had with the center, they were rather, it was not a kind of talks which he has today told the journalists, but they were made to believe that this schedule and statehood is something which is not beneficial for Ladakh. So as such, he is saying, how would the talks I'll answer that. move forward? So how do you see it? So the thing is, Sonam has been out after 5 months, you know. There's a lot to process. He has not yet spoken to the leaders to understand what conspired in the last 5 months. I have been the interlocutor to, convey whatever has happened. So let him get, we will meet you all again when he has a grip on the situation, and when we can talk about the way Go forward. back to Ladakh. Meanwhile, we want to start the trust building process by trusting that they will not have nothing to give, and they would have Something to give. more than something. I mean, mutually satisfactory things on the table. Well, that's what the talks will be about, and it will not be just me. There will be many leaders from Ladakh, but overall, the main two issues are safeguards under 6th schedule or statehood or restoration of democracy. So, as I said, give and take. Therefore, if not on both, we would hope on one we are flexible, on the other side is flexible. That's how we want to expect to give and take and be flexible in the interest of nation building. गोल था टॉक्स, तो अभी जब टॉक्स हो रहे हैं तो क्यों अनशन करना? हाँ, 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 जी. What about? Can I answer? No, I'll answer. and then so initially there were allegations after allegations, full of allegations, but as you must have followed in the court, layer by layer, each of them were shown to be meaningless or misunderstood. At best, misunderstood, at worst, mischievous. But I want to believe there were some misunderstandings that crept at some level in the hierarchy and misled people, the rest of the people, into believing that Sonam Wangchuk is a monster, he has little horns hidden in his hair or something, which they found in the court, evidence after evidence, that there is nothing. Each of these were, either linguistic or otherwise misunderstandings. Out Yeah. of context. Yeah, please. No. No, that's it. Yeah. So, yeah, I won't go into detail how they were. It was like misunderstandings, like you say in Hindi, roko mat jane do, को अगर कहें रोको मत जाने दो, इस तरह के सारे मिसअंडरस्टैंडिंग से ये ग्राउंड्स बने हुए हैं. तो ये सब टूट गए हैं, इसीलिए अभी हमें उम्मीद है कि ये सब अब क्योंकि ये कोर्ट में पेश हुए तो जजेस को तो समझ आया, मगर सरकार में भी जिनको नहीं समझ थी उन्हें समझ आया कि असल में ये गलत फहमियों का एक शिकार गुलदस्ता बन गया जिसके वजह से ये सब आनन फानन में हड़बड़ाहट में हो गई. इसलिए हम इन पे कोई वो नहीं रखना चाहते हैं. मेरी फितरत नहीं है कि मैं कोई कड़वाहट कुछ उठाऊं. मैं तो आगे की देखता हूं, पीछे के लिए तो हमारे पास वक्त भी नहीं है. Well, through what I understood from
her of what is happening in the court. Yes. चले I think. One last question. You were also unwell while you were there in Jodhpur jail. Please do tell us something about your time there. हाँ, What did you do? You are also writing a book. Yes. You won't be able to complete it there. Yeah. But yeah, like, थैंक यू। तो जेल के अंदर वैसे तो माना जाता है ये सबसे क्या कहते हैं ख़तरनाक ड्रैकोनियन वगैरह हैं, और जिनको शायद असर हो हैं भी, क्योंकि मैंने कहा आपको इतना एकांतवास कहेंगे या टोटल आइसोलेशन था कि मैंने कोई चेहरा बिना वर्दी के देखा नहीं। तो वो किसी के लिए बहुत पीड़ादायक हो सकता है, मगर मेरे लिए नहीं था, क्योंकि मेरे लिए ये एक तरह का गॉड सेंड गिफ्ट था कि मैं सेल्फ रिफ्लेक्ट करूं, एक्सप्लोर करूं, विचार करूं, पढ़ूं, लिखूं, और ये एक तरह का ग्रोथ का रिट्रीट, मेडिटेशनल रिट्रीट सा था। और हाँ, तो जो भी मुश्किलातें थी वो उसका हमने इस्तेमाल किया यूँ कहेंगे, और फिर बिल्कुल अलग थलग भी नहीं थे, हालांकि बहुत दूर 1000-1200 किलोमीटर दूर थे, मगर गीतांजलि हर हफ्ते 1 या 2 बार वहाँ मुझसे मिलने आती थी। मेरे भाइयों बहनों ने जो सब वहाँ आए, और कुछ तो वहाँ पर 2 महीने के लिए कैंप करके रहकर वो मुझे अपना साथ देते थे, तो इसलिए मुझे कम मुश्किल लगा, वरना हाँ शायद ये सामान्य उसमें मुश्किल ही रहा होगा। तो मैं सीखता रहा, चींटियों से सीखता रहा, अपने ख़यालों से, हर चीज़ से सीखता रहा। तो जी, जेल के सिपाहियों का व्यवहार कैसा रहा? just tell about the books in the jail that people who had written after the that books. I'll yeah. People who had written books, how it motivated you. हाँ, I तो got जेल all में the मैंने books. मुझे इन्होंने दी जेल में लिखी गई पुस्तकें तो जैसे बड़े शख्सियत श्री अरबिंदो थे, पंडित नेहरू थे, उनकी जेल में लिखी गई किताबें पढ़ने का मुझे मौका मिला। इस तरह से मैंने जेल के अनुभव को समझते हुए, और जो उन्होंने किया उससे और मुझे प्रेरणा मिली कि जेल तो एक ले देकर मैं ये कहूँगा, जेल को जो डरावना हवा बना रखा है ना, वो उसको हवा निकालने की ज़रूरत है। मैं तो यूँ कहूँगा, मैं अपने हर एक को एक बार ज़िंदगी में जेल जाना चाहिए जिसका मतलब ये भी है कि हर एक को किसी घर के दुबक के रहेंगे तो कुछ लोग जाएंगे बहुत लंबे समय के लिए, सब एक बार ज़िंदगी में 1 साल आधा साल जाएंगे, तो कोई शायद ऐसे मुश्किल जेलों में जाना ना पड़े, इसलिए हिम्मत की उम्मीद कर। बट हैविंग सेड दैट, मैंने ये सीखा कि जेल में बहुत रिफॉर्म की ज़रूरत है। जेल को अगर हम एक ऐसा गार्डन ऑफ ईडन बनाएं कि वहाँ के ट्रांसफॉर्म हो, वो बेटर है रादर दैन कि प्यूनिटिव पनिशिंग एक जगह हो। तो ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं कि जैसे गोयनका जी ने वहाँ जब विपासना करवाई थी तिहाड़ में, तो लोगों में एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन आया था। तो हमें एक बहुत इवॉल्व सोसाइटी बनना चाहिए कि जेल एक पनिशमेंट की जगह ना हो, बट एक ट्रांसफॉर्मेशन की जगह हो। तो उसके लिए काम करना ज़रूरी है। बहुत अच्छा, यही मैं आपके सवाल का जवाब देते हुए, जोधपुर सेंट्रल जेल में जो मेरे कारावास, जिसे हाई सिक्योरिटी, टोटल आइसोलेशन, जहाँ कोई, वो कहते थे परिंदा भी पर नहीं मार सकता यहाँ पर, तो ऐसा वो था। और जहाँ तक सिपाहियों का आपने पूछा, मैं बहुत प्रभावित हूँ, सच पूछें तो बहुत प्रभावित हूँ। कंपैशन, करुणा, मगर फिर अनुशासन के साथ कर सकते नहीं कर सकते, मगर जो हो सकता है उसको तारे ज़मीन पर आपको लिए उतार के लाएं। तो इस तरह से मैंने काफ़ी जेल सोचते होंगे, इसलिए नहीं कहूँगा, बुराइयाँ नहीं गिनूँगा, मगर अच्छाइयाँ जो मुझे बिल्कुल नहीं पता थी वो ज़रा बताता हूँ आपको। आपको पता है जेल में एक बैंड है,
कैदियों का एक बैंड है जहाँ वो बैंड सीखते हैं और फिर वो बैंड शादियों में अवसरों पे जाते हैं और वो बाहर जाते हैं, उन पे भरोसा करते हैं, एक दो सिपाही साथ में जाते हैं, वो बैंड बजा के मनोरंजन करके और उसके लिए उन्हें पैसा भी दिया जाता है। बहुत दिलचस्प प्रोग्राम्स भी थे। जैसे लोग पूछते हैं खाना कैसा था, मुझे बुरा नहीं लगा बल्कि अच्छा लगा। कई चीज़ें तो जो आप हेल्थ रिजॉर्ट्स में जाते हैं, हमें मंग स्प्राउट्स और चना स्प्राउट्स मिलते थे सुबह, तो आप ये ना सोचिए कि सब कुछ अच्छा था, मगर इतना बुरा भी नहीं था। और एक मिनट मैं ये एंड करूँगी और सेम हम एक्सटेंड करेंगे कि जो मीडिया में कई बार हमको काफ़ी नेगेटिविटी और सेंसेशनलाइजेशन, ऐसा लगता है कि दुनिया में बहुत कुछ बुरा चल रहा है, लेकिन इस एक्सपीरियंस में मैंने ये सीखा कि हर एक अगर बुराई है, ईविल है, तो 10 अच्छा है। यू नो, कुछ भी प्रेशर था, चाहे वो मीडिया पे हो, चाहे वो जेल पे में हो या सुप्रीम कोर्ट में हो या किसी में भी हो, पर हर एक के दिल में मैंने सोनम के लिए जो एक इज़्ज़त और प्यार देखा है और जो सबके लिए एक जो पर भी मुझे कहता था कि ये ऐसा होना नहीं चाहिए था, यू नो, तो जो हमारे अगेंस्ट भी थे इंस्टीट्यूशनली, वो भी दिल से हमारे साथ थे। तो इतनी में हमें भरोसा रखना चाहिए कि ज़मीर अभी तक दुनिया में लोगों की मरी नहीं है, यू नो, ज़मीर ज़िंदा है और कॉन्शियस ज़िंदा है और फ्यूचर होपफुल है। और एक बात जो मैंने देखी वहाँ पर कि जेल में ज़्यादातर लोग गरीब तबके के हैं, 70% बिल्कुल गरीब, और शायद 5% से भी कम होंगे जो वेल ऑफ जिसे कहते हैं वो हों। तो ये मुझे बहुत अजीब लगा कि जो गरीब हैं, जो अनपढ़ हैं, वो जेल पहुँच रहे हैं, तो फिर कसूर किसका है? जो उन्हें अनपढ़ रख रहे हैं, जो उन्हें गरीब रख रहे हैं, उनको भी तो कोई सज़ा हो या कुछ तो पूछताछ हो, क्योंकि ये पैटर्न साफ दिख रहा है कि गरीब ही जेल में। तो इसलिए एक तरफ तो मैं चाहूँगा कि हमें बुनियादी बदलाव लाने की ज़रूरत। अगर सब आर्थिक रूप से अच्छे खासे होते, सब पढ़े लिखे होते, तो शायद कोई जेल में नहीं होता। इस हिसाब से 30% ही होते जेल में, मगर आज 70% वो हैं जो बहुत कमज़ोर तबकों से है, निम्न जाति जनजातियों से हैं, वो सब हैं। ये बदलने की ज़रूरत है। एक तरफ सरकारों को बदलने की ज़रूरत है, दूसरी तरफ जो मेरा फार्मूला था कि पढ़े लिखे साहब भी तो जाएं ना जेल, किसी कॉज के लिए जाएं, चोरी में ना जाएं, तो किसी के मकसद के लिए खड़े होकर जाएं, तो ये प्रतिशत 50-50 होगा पढ़े और अनपढ़ का। ये मैं देखना चाहूँगा।